So, hello guys, good morning. I'm Sumit Nahak. I had secured All India Rank 691 and I was teaching us rotational motion. And this is going to be our last lecture. Last lecture I'm particularly exercise I'm start कर देते rotational motion रो. मैं तुमको example number 8 जाएं कोई थी I guess. Example number 8 जाएं. हाँ. D value 18/25 है. Example number 8 जाएं कोई थी. तो आज हम rest of the examples, example number 9 to example number 17. आज हमें solve करिए. Okay. So let's start. Example number, exercise. Question number 6.9. Okay. So question number 6.9 goes. A car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axis is 1.8 meter. Okay. So the car dida chakka, ada chakka, pach chakka. Front and back wheels. Front and back axis is 1.8 meter. So likhida eda front, eda back. The distance is 1.8 meter. Okay. So next one goes. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. For example, eda front eda back axle car eda front axle drew 1.05 meter distance with center of gravity. So 88 point. Eda chuna the center of gravity. So 82 center of gravity distance is 1.05 meter. Okay. After question what will determine the force exerted by the level ground on each front and each back side. माने अब जो front axis ऊपर जो ground जो normal force होची छोटा force होची NF back axis ऊपर भी ground के छोटा force होची NB ए दीटा हमको वैल्यू काढिया अछि अब कार वेट के दे छी माने तळु से W केते होची W equal to 1800 kg. Okay. तो हम ଏବେ NF और NB रो वैल्यू काढिया अछि. So it is a card पे सीधे में देखिया जब it is in both translational and rotational equilibrium. Translational equilibrium भी अच्छी है रो और rotational equilibrium भी अच्छी. तो translational equilibrium भी अच्छी तरह meaning कौन? ऊपरू जति force पड़ची तळो को भी सेती force पड़ची अरे ऊपरू net force केते पड़ची NF normal force ground केते force होची ऊपरू ऊपर force NF plus NB होची कि upward question number 1. NF plus NB is equal to W. W the value कितना value 1800 into 9.8. 9.8 और multiply करो. 0 value कितना 9.8. 1800 into 9.8. तो ले कितना NF plus NB 1800 into 9.8 का ले तारा value कितना 9.8 को मुकॉन लिख परी. देखो हटने 98 by 10. गोटे करता 180 into 98 180 into 98 कल कितना इसको 17,640 न्यूटन. ओके एडा होची मोर इक्वेशन नंबर 1. एडा होची मोर इक्वेशन नंबर 1. तापर एडा पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अछि ता सहित ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम रे अछि. रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि तार मीनिंग क्लॉकवाइज जति के को टॉर्क मिलुची क्लॉकवाइज जति टॉर्क मिलुची एंटी क्लॉकवाइज भी जति भी टॉर्क मिलुची. तो क्लॉकवाइज ये टॉर्क कितने NF into it has center of gravity NF into 10.5 हो जाएगा clockwise torque. Anti-clockwise torque कितने पड़ची NB into एतिकी rest. इटा जब पूरा 1.8 मीटर इटा जब 105 इटा कितने 0.75 मीटर. Anti-clockwise कितने torque पड़ची NB into 0.75. इटा होची हमारी equation number 2. ओके इटा होची anti-clockwise. ठीला तमरे दीडा इक्वेशन अछि एटु तमे NF फाइंड वैल्यू केडा किंदी काडियो NF एंड गुड फर्स्ट इक्वेशन एटी आसला तो एठी जदी मो वैल्यू पकेबे एठी जदी मो एठी NB रो वैल्यू काडिबे NB रो वैल्यू केते हो 17,640 माइनस NF. ओके तो NB रो वैल्यू डा नेकी से पक्का एठी NB रो वैल्यू पक्का तो NF into 1.05 is equal to NB रो वैल्यू केते आसला 17,640 minus NF into 0.75. Okay. So ଏବେ ଏଟାକୁ ଏଡା solve करिया NF into 1.05 is equal to
17,640 into 0.75 minus NF 0.75. So এটা minus হচ্ছে এপড়ে হলে plus হচ্ছে NF 1.05 plus 1.75 কেতে হবো 1.8 এপড়ে আছে 17,640 into 0.75 তবে এডি NF র ভ্যালু কেতে হবো টোটাল ভ্যালু 17,640 into 0.75 divided by 1.8. तो এটা को हम যদি সলভ করিয়া NF র ভ্যালু কেতে আসিবো 7,350 নিউটন। तो NF র ভ্যালু পড়া আসলা 7,350। तो अब NB র ভ্যালু আমি কাটিয়া NB ইকুয়াল টু কোন থিলা 17640 minus NF। तो 17640 minus 7350 তাহলে NB র ভ্যালু কেতে আসিবো 10290 10290 নিউটন। ওকে এটা হচ্ছে টোটাল ফোর্স পুরা ফ্রন্ট এক্সিল উপরে কেতে পড়ছে হচ্ছে NF। এটা भी চিন্তা হচ্ছে টোটাল পুরা ফোর্সটা ব্যাক এক্সিল উপরে কেতে পড়ছে হচ্ছে 10290 বাট এটা কোশ্চেনে কম বোঝাচ্ছে level of ground on each front wheel and back wheel each front wheel and back wheel। तो দুইটা হুইল উপরে 7350 পড়ছে তো গোটে হুইল উপরে কেতে পড়ে এটা হচ্ছে টু হুইল উপরে on each front wheel কেতে যাব 7350 divided by 2 যার কি ভ্যালু আছে 3675 নিউটন। সেম সেমিতি সব দুইটা যা ব্যাক হুইল উপরে 10290 পড়ছে on each back wheel কেতে পড়িও 10290 divided by 2 আর ভ্যালু কেতে আসবে 5145 নিউটন 5114। ওকে তো 3675 and 5145 নিউটন হচ্ছে आंसर। तो एग्जांपल नंबर 6.9 चला अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें क्वेश्चन नंबर 6.10। क्वेश्चन नंबर 6.10 कौन पूछे टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू ए होलो सिलिंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर। ओके गोटे होलो सिलिंडर अछि और सॉलिड स्फीयर अछि होलो सिलिंडर और सॉलिड स्फीयर दिजन द ऊपर टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पड़ला बोथ आर हैविंग द सेम मास एंड सेम रेडियस both are having same mass and same radius मैं ऐसे बने दोचे यहाँ से क्वेश्चन है देखिए सो ज्यादा लीजिए लिखित चला both are having same mass same radius and equal torque is applied on both equal torque। okay the cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry और standard axis of symmetry कौन center पे पास करियो and the sphere is also free to rotate about an axis passing through its center free to rotate। okay so question is which of the two will acquire the greater angular velocity after a given time। तो एटा हम कोन कहै छी हम कोन जानछनी torque equal to I into alpha। तो हम क्वेश्चन एडी कोन कहै छी कहारो angular velocity अधिक रहइबो after a given time। तो जदि हम पाखे अल्फा र वैल्यू अछि त हम काढी पारे कार एंगुलर वेलोसिटी अधिक रहइबो। ओके तो एडी फर्स्ट में एग्जांपल है सिलिंडर होलो सिलिंडर रे I1 माने करो उस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया तार वैल्यू केते m r स्क्वायर क्लियर I1 होचे m r स्क्वायर। तो टॉर्क डिवीजन जगह ऊपर सेम पड़छ तो टॉर्क का वैल्यू हम कोन जान I1 * अल्फा 1 माने I1 होचे I होलो सिलिंडर I अल्फा होचे होलो सिलिंडर तो टॉर्क इक्वल टू केता आसीबो I1 र वैल्यू केता जानछन m r स्क्वायर तो अल्फा 1 र वैल्यू अल्फा 1 र वैल्यू केता आसीबो एटू अल्फा 1 इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर। ओके एबे स्फीयर देखो स्फीयर माने करो मो नोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू I2 स्फीयर में एत कोन जानछन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर। ओके एबे आउथरे टॉर्क रो फार्मूला कोन I2 into alpha 2 टॉर्क जनर सेम आर टॉर्क निला आर भी टॉर्क को सेम मैनेज I2 रो वैल्यू केते 2/5 mr स्क्वायर into alpha 2 तो एडी alpha 2 रो वैल्यू कोन आछी 5/2 टॉर्क by mr स्क्वायर बा एडा में कोन लिख परिया 5/2 माने 2.5 और अल्फा टॉर्क by mr स्क्वायर इक्वल टू कोन अल्फा 1 तो अल्फा 2 रो वैल्यू केते हिजो 2.5 अल्फा 1 के अल्फा 2 रो वैल्यू केते हिजो 2.5 अल्फा 1। तो अबे कोन कहै छी which of the two will acquire a greater angular speed after a given time t।
given time t. Which of the following will get a more angular velocity? So more angular velocity r omega 1 କେତେ ହବ? ମନେ କର ଦିଜନ ଯାକର ଇନିशिয়াল velocity ଥିଲା 0. ଆର ବି ଦିଜନ ଯାକର ଇନିशिয়াଲ velocity ଥିଲା. କାହାର ଓମେଗା which of the following will get a more angular velocity? ओमेगा फाइनल आर केते हबो? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. ओमेगा 1 इक्वल टू 0, अल्फा होचर अल्फा 1 into given time t. So omega final equal to r omega final केते जो अल्फा 1 into t. सेम सिमिति ओमेगा फाइनल ऑफ होलो सिलिंडर. ओके सेम सिमिति स्फीयर रो जदि ओमेगा इनिशियल हो 0 और ओमेगा फाइनल केते हबो? ओमेगा 1 plus अल्फा t. ओमेगा फाइनल is equal to ओमेगा इनिशियल हो 0 अल्फा एडी केते पड़े अल्फा 2 जगह में कोन लिख पेरा 2.5 अल्फा 1 भी लिख पेरे कि ने गिवन टाइम होची t. तो r ओमेगा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होची 2.5 अल्फा 1 t. एडा होची स्फीयर. तो के ग्रेटर स्पीड अप्लाई करची स्फीयर ओमेगा is greater than omega of hollow cylinder. अरे कोन जानि पाले जदी दिजन जागो ऊपर हमें सेम टॉर्क पकोचंदी गोटे स्फीयर और होलो सिलिंडर ऊपर सबले मन रखो स्फीयर टा अधिक स्पीड अक्वायर करबो देन द होलो सिलिंडर आफ्टर गिवन टाइम. ओके तो अब हमें फर्स्ट एग्जांपल नंबर 6.10 सला बे हमें मूव करे नेक्स्ट एग्जांपल होची एग्जांपल नंबर 6.11. 6.11 में कोन कहूची a hollow cylinder of mass 20 kg rotates about an axis with an angular speed 100 radian per second. The radius of the cylinder is 0.25 meter. जहाँ कोई से कर दिया गोटे solid cylinder. ये बस का solid cylinder. Example है कौन हमें solid cylinder. दाउची solid cylinder जहाँ की mass होची 20 kg rotates about an axis rotate कोचेड़ा about an axis with angular speed 100 radian per second. Okay, the radius of the cylinder is 0.25 meters. How given us radius given us 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? हमें कौन जानते? Kinetic energy, rotational kinetic energy value कौन? Formula half I omega square. Omega तो given us I नहीं I का दिया हमें solid cylinder I of solid cylinder पानी तो हमें formula जानते I of solid cylinder कौन? Half m r square. Half into mass के तरह 20 kg. Radius कहते हैं 0.25 meter. 0.25 into 0.25. 0.25 को मैं 25 by 100 लिख कर भी into 25 by 100. तो अल्लाह वैल्यू कितना है 0 2 20 कैंसिल कर 10 गुड 0 कैंसिल ला 25 by 100 4 थर्ड वैल्यू कैसे 25 by 40. आपको जब हमें सॉल्व करें 5 रे जब हम कैंसिल करें 5 by 8 एटा जब सॉल्व करें आंसर आसबो 6.25 kg meter square I. असला I रे वैल्यू ताहार पे हम गाइस काइनेटिक एनर्जी काढिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल कोन हाफ I रे वैल्यू केतला 0.25 0.625 into ओमेगा ओमेगा रे वैल्यू केते 100 100 रे स्क्वायर करो 100 रेडियन पर सेकंड इज 100 into 100. ओके तो एडा को जदी मो काटी गेले आ तळे भी 1000 पर आसीबो तीटा शून्य कैंसिल गोटे शून्य कैंसिल 2 को 10 रे काटले 5 625 into 5 equal to kinetic energy equal to 3125 joule. Okay तब after next question what is the magnitude of angular momentum of the cylinder about an axis. आउथर कोन गाडी कोइ angular momentum equal हम कोन जानते momentum जेतो linear momentum गाडी को mv करथिले एडी mv एनालॉग होई दियो m जगह कोन रहे I into omega I रे वैल्यू केते असला 0.625 into omega रे वैल्यू हम कोन जानछन omega रे वैल्यू केते 100 तो 100 ए पके केते असला 62.5 angular momentum रो यूनिट कोन बडी kg meter square by second बा एडा को हम कोन लिख परिया 62.5 joule second. ओके angular momentum काढे कोइला काढ देले और kinetic energy काढे कोइला kinetic energy भी काढ. Example number question number 6.11 is solved. Example number 6.12. Question number 6.12 कौन गई first करे a bit कौन गई a child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched
outstretched. It is child. The turntable is set rotating with an angular speed 40 revolution per minute. कितने angular speed से बोले थे 40 revolution per minute. How much is the angular speed of the child if he folds his hand back? टर्नेबल से मूव करतला एबे कोन गला से हाथ को फोल्ड कर देला ओके एडी कोन जाबे जतो जे हाथ जे तळ आउटस्ट्रेच रखतिला एठियार मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिका देन द सेकंड ओके आ सेकंड केस रे तळ हाथ भितर रखे से कम स्पीड अधिक स्पीड बिल छडा पर कहू how much is the angular speed of the child if he folds his hand back thereby reduces the moment of inertia 2/5 times of its initial velocity मन करो एठी I1 थिला I एडी I2 केते ही होची 2/5 times of I कोन पे होची रिड्यूस होची यार कोन पे ना से हाथ दीटा को भितरु आंदले मास कोडा को जो आउटस्ट्रेच इतला m² m * r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने आर डिस्टेंस एडी अधिका थिला एडी तो कम स्ट्रेच कर दोची कम हो जाउची मोमेंट डिक्रीज हो जाउची तो कम क्वेश्चन पचाउची how much is the angular speed of the velocity एडी तार angular speed केते तो एडी हम कोन जान जेहेतु किछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं assume that the turnable rotates without friction हम किछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो by applying conservation of angular momentum हम एडी कोन जान I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 I1 रो वैल्यू कोन I into omega 1 रो वैल्यू कोन 40 rpm is equal to I2 रो वैल्यू होची 2/5 I into omega 2 तो वैल्यू प्लस I cancel omega 2 is equal to 5/2 into 40 20 omega 2 equal to 100 revolution per minute okay. So the next question is so that the child's new kinetic energy of the rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. Okay. So कौन कहते हैं new kinetic energy माने second case kinetic energy कर कहता है so half I omega square half I2 into omega 2 square तो half I2 जगह हम कौन लिख रहे 2/5 I omega 2 square omega 2 का वैल्यू कितना है 100 into 100 2 cancel 5 को 100 काट ले 20 तर वैल्यू कितना है 2000 I होची ke2 रो वैल्यू सेम सिमिलरली ke1 रो वैल्यू कितना है half I1 omega 1 square half I1 रो वैल्यू I omega 1 रो वैल्यू कितनी दी थी 40 into 40 ke1 रो वैल्यू कितना है 800 I तो ऑब्वियसली लिखा दो चेड कोन ke2 is greater than ke1 एडा हम प्रूफ करैला so that the child's new kinetic energy is more than the initial kinetic energy तो सेडा सॉल्व करैला हेला तो क्वेश्चन नंबर 6.12 is solved एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 6.13 Question number 6.13 कौन पूछिए a rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter तो what मोडी hollow cylinder बने दो फर्स्ट what hollow cylinder बने फर्स्ट में and as one hollow cylinder a rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder अति गोटे एडा नेग्लिजिबल रोप गोटे रोप राउंड करछ ओके तापरे आर मास के दे दिछि 3 kg एंड रेडियस इज 40 सेंटीमीटर को मु डायरेक्ट हमर ऐसे यूनिट लगछ 0.4 मीटर तापरे क्वेश्चन काना what is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 newton ए रोप टाको केते फोर्स जिताला 30 न्यूटन तो हम एडी एंगुलर एक्सेलरेशन काढियार अछि फर्स्ट सेकंड कोन होय छै व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप
linear acceleration भी काढियार अछि assume that there is no slipping तो क्वेश्चन में लिख देले तो हमो एडी कौन कर एंगुलर एक्सेलरेशन में हम कौन जानछन फार्मूला जहां फार्मूला तोर फर्स्ट बिंदु अछि सब लिखा बा एंगुलर एक्सेलरेशन में हम कौन फार्मूला जानछन टॉर्क इक्वल टू I into alpha but तुमको I already given है I रो वैल्यू हम किन काढिया काढी परिया और टॉर्क भी तो गिवन है टॉर्क किन काढी परिया टॉर्क हम फार्मूला जानछन ना टॉर्क इक्वल टू कोन फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस फोर्स तो गिवन अछि फोर्स केते 30 इनटू रेडियस केते 0.4 तो टॉर्क का वैल्यू आसी गला 12 न्यूटन मीटर ओके तापर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढी रहछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एटा कोन दितला मु होलो सिलिंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलिंडर कोन ये सब मन रखिया में पड़े तो मु कहितली जो लास्ट को मु टिके त मु अदर सब दिन रिवाइज करे दी इन सिस्टमैटिक मैनर ज्यादा तो मु लास्ट 5 लेक्चर कहितली ओके होलो सिलिंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन हो m r स्क्वायर मास केते गिवन अछि 3 kg r स्क्वायर 4/10 into 4/10 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडी केते आसीबो 3 चौको 12 4 चौको 48 48/100 बा 0.48 kg मीटर स्क्वायर तो एडी हमें एबे अल्फा काढी परिया टॉर्क पे अछि हम बगर आई के अछि अल्फा पे काढी परिया अल्फा इक्वल टू कोन टॉर्क बाय आई तो टॉर्क का वैल्यू केते 12 डिवाइडेड बाय 0.48 12 by 48 into 100 12 चौक 48 4 को 100 काटले 25 तो अल्फा इक्वल टू 25 सेंटीमीटर नेगेटिव ओके तो अल्फा वैल्यू आसीला एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को गइसी फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन पे हम कोन जानछन फोर्स इक्वल टू कोन मास इनटू एक्सेलरेशन एडी फोर्स केते गिवन अछि 30 न्यूटन डायरेक्ट पुट द फार्मूला केते आंछ 30 न्यूटन मास भी गिवन अछि 3 kg into a the acceleration केते जो 30/3 equal to 10 meter per second ओके दादा हम कड़े बता दिरा जिंस हमें काट दे अबे हम मूव करिए हमरो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6.14 हम कोन कहूची to maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second square गोटे रोटर अछि जाका में मेंटेन करियर अछि रोटर माने गोटे मोटर टाइप ओके ताका में मेंटेन करियर अछि एंगुलर स्पीड 200 रेडियन पर सेकंड एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 6.14 कोन होला गोटे रोटर अछि जाका में मेंटेन करियर अछि केते एंगुलर स्पीड रे 200 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रेडियन पर सेकंड सॉरी रेडियन पर सेकंड को में मेंटेन करियर अछि an engine needs to transmit a torque भी given अछि 180 newton okay what is the power acquired by the engine मुझे टॉर्क गिवन अछि और एंगुलर स्पीड गिवन अछि कोन काडे अछि जहां जे तुम एक क्वेश्चन ना करिया पे बेसिक इजी ट्रिक होचे जहां जे तुम गिवन अछि लिख दियो तापर कोन क्वेश्चन काडे अछि एटी कोन काडे अछि पावर acquired by engine ओके तो पावर काडे अछि तो तुम जहां जे गिवन अछि लिख दियो तापर तुम जोडा काडिया पे गयो ताकू लेकी कोन तुम फार्मूला जानि छ से फार्मूला गुडे को मन पाणियो ट्राई करियो तो हमें linear motion में कौन जानते हैं in linear motion we know that power equal to force into velocity जानते हैं सेम सिंपली rotational motion रे power equal to force आने ला कौन torque into velocity आने ला कौन तो हेला torque into angular velocity तो टॉर्क का वैल्यू गिवन अछि तो पावर इक्वल टू कोन टॉर्क का वैल्यू गिवन अछि 180 into angular velocity भी गिवन अछि angular velocity केते 200 तो 180 into 200 is equal to power equal to 36,000 watt जोड़ा भी हम लिख पाया 36 किलो इस क्वेश्चन ना एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 6.14 तापर हम मूव करिया क्वेश्चन नंबर 6.15
ए क्वेश्चन दा सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबे न जेती क्वेश्चन करछो ताइरो एटा सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा टिके भलसे सुनियो ओके कोन कहछे तो हम यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r व्हाट इज द डिस्क दिछे जार रेडियस होची r डिस्क टर्म ड्रा करे r रेडियस होची r तापर कोन से कहछे a circular hole of r by radius r by 2 is cut out एटा को डिस्क दिखला ताइरो हमें कोन करछनी गोटे आउट डिस्क जार की रेडियस होची r by 2 is cut out माने एतिकी पार्ट कटाइला तो एबे डिस्क पे कोन कोन रहला एतिकी पार्ट रहला बुझा पड़ला आगुर गोटे सबको क्वेश्चन दिछि आगुर गोटे सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r जो थ्री को हमें r by 2 रेडियस रो गोटे आउट सर्कुलर डिस्क को काट दे तापर कोन होल इज कट आउट तापर कोन होइछि the center of the hole is r by 2 from its center of original disk okay एडा तार सेंटर थिला r सेंटर ता r by 2 डिस्टेंस अछि r by 2 डिस्टेंस अछि तेंदिया मुद्रा करछि तापर कोन होइछि locate the center of gravity of the resulting flat body कोन होइछि locate its center of gravity center of gravity ता को जगह रे हम लोकेट करियो एडा हम किम करिया हमें कौन जानछन्ते कि यूनिफॉर्म मास बॉडी और जोटी के ग्रेविटी कांस्टेंट थिबो बट यूनिफॉर्म मास बॉडी रे जोटी ग्रेविटी कांस्टेंट थिबो तार सब बेले सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट लाई करिया लाई ऑन सेम पॉइंट एटा सब बेले जानछो जब गोटी यूनिफॉर्म मास रो सब बेले सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट लाई करिया तो आर जदि हमें सेंटर ऑफ मास ते कोडी के मूव इच्छे दे हमें काढी दबा ताला हमें कोन काढी करे इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी दा भी को जाको मूव इच्छे काढ दे के पारिगा ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन लेट अस assume m is mass per unit area okay mass per unit area is m तो मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क माने आगुर जो मास थिला पूरा ओरिजिनल डिस्क बुझला ना कोन कहछ जदी हमें तार सेंटर ऑफ मास तो देम करदा काडी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने कोन सेंटर ऑफ मास जोले को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेठी ही लाई करछि कम पे काई केना रहछि यूनिफॉर्म मास बॉडी विथ यूनिफॉर्म ग्रेविटी जार भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह ही लाई करे तो सेंटर ऑफ मास जोडी कर दाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऑटोमेटिकली बाहर पड़े तो मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी ओरिजिनल डिस्क केता वो m होछि मास पर यूनिट एरिया तो m into pi r square एटा माने कर m1 तापर एबे मास ऑफ कटआउट जोडा कटआउट करला तार भी तो सेम m होछि मास पर यूनिट एरिया तार एरिया केता हो pi into r by 2 square जहा कि m pi r square by 4 एटा होछि m2 ओके तापर हम देखतो आउट इन छोटू काय बोलितले माने कर लेट्स अस्यूम ए पॉइंट आउछ ओरिजिन रे लाइक होछ एडा को लाइक करियो r by 2 0 ओके एडा होछ अस्यूम करछन तो हमें जतला सेंटर ऑफ मास काढुथिले गोटे जिंस हमें जतला सेंटर ऑफ मास काढुथिले सेंटर ऑफ मास काढिया पे फार्मूला कोन थिला m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 एडा केतला हम अप्लाई करते जतला दीटा बॉडी थिला गोटे माने जदी एडी गोटे बॉडी अछि एडी गोटे बॉडी अछि जिंगा बॉडी अछि बट आउ जदी माने गोटे बॉडी ऊपर आउटे बॉडी अछि ताले हमें प्लस करिया बट एडी गोटे बॉडी ना आउटे बॉडीटा कट आउट ही कढाई अछि तो जदी हम ए फार्मूला पकेटा भूली आसियो बुझबा छ एडा गोटे बॉडी कटाई अछि एडी m2 नाही m2 नथिला रे सेंटर ऑफ मास पड़िछि कैलकुलेट करे तो m2 एडी नाही m2 नाही सेति पे फार्मूला टा मॉडिफाई की कोन हितबो x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 minus m2 x2 divided by m1 minus m2 बुझ पलन ने जदी तीन जा बॉडी थांता ताहले हमें प्लस यूज करछ एथिरे गोटे बॉडी हम एक्सपेक्ट करी काट दी छ m2 टा से तार पर हम सेंटर ऑफ मास करे छै ता हम एडी माइनस ओके तो एबे को हमें सेंटर ऑफ मास करे सेंटर ऑफ मास कोडी की मूव होई छै काडिया ओके तो xcom x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास रो काडिया पे फार्मूला कोन m1 x1 minus m2 x2 divided by m1 minus m2 m1 रो वैल्यू कोन m pi r square
x1 ର value कौन 0 minus m2 ର value कौन m by r square by 4 into x2 ର value कौन r by 2 divided by m1 minus m2 m1 ର value केता होतरे m by r square minus m by r square by 4 इरा value 0 आसे तो ऊपर केता आसे m by r cube divided by 8 by इधर को माइनस करो एलसीएम में जो 4 टा ऊपर जीवो तर केता आसे 3 by 4 m by r square okay 3 by 4 m by r square equal to xcom तो एडी पे xcom रो वैल्यू केता आसीबो m pi cancel r square ru r cancel एडा ऊपर को नहीं जो minus r by 8 into 4 by 3 to x center of mass is equal to minus r by 6 okay तब रेडी y axis रे तो तमे काढी लिखो यो ycom ये y axis रे नाही माने r center of mass तो r डिस्टेंस 0 थला r भी डिस्टेंस 0 थला तो y axis रे पॉइंट 0 है तो y center of mass तो 0 ही आसे तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कौन minus r by 6 0 ओके तार सेंटर ऑफ मास ए बॉडी डार सेंटर ऑफ मास किछि ए पॉइंट लाई करछि जार की कोऑर्डिनेट minus r by 6 0 ओके एटा थिला हमर क्वेश्चन नंबर 6.15 आई होप तो एटा क्लियर हला बुझा पड़ा ने माउथ एटा क्वेश्चन ना कोइ दछि टिक 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 ला क्वेश्चन ना अगर गोटे डिस्क थिला जार रेडियस थिला r जो थ्री पे r by 2 रो रेडियस रो गोटे सर्किल को बाहर काट देले एडी r by 2 रो सर्किल को बाहर काट देले जेहेतु हमें किछ गोटे मास को एक्सट्रैक्ट करछंती एठी हमें केबे भी सेंटर ऑफ मास कालाडू प्लस करी काढी परन तो माने एडी मास टा एक्सट्रैक्ट ठीक अछि m2 एडी नाही सेति पई हमें मास टा को एक्सट्रैक्ट काढिया पे मॉडिफाई हला को माइनस साइन असला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस साइन डिनोमिनेटर हला जोड़ की तब हमें माइनस लगे सॉल्व करले माइनस लगे सॉल्व करला पर हमर आंसर असला xcom is equal to minus r by 6 minus r by 6 ले बुझलो सेंटर और लेफ्ट साइड रे ए जगह रे लाइक सेंटर ऑफ मास बा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास बा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पॉइंट लाइक ओके तो क्वेश्चन नंबर 6.15 क्लियर हला एबे हम मूव करिया आ दीटा क्वेश्चन रहला लास्ट टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6.16 तो अबे क्वेश्चन नंबर 6.16 क्वेश्चन नंबर 6.16 कोन गोची a meter stick is balanced on a knife is at its center a meter stick is balanced गोटे माने कर meter stick मो पाकर अछि एडे बडा भलो क्वेश्चन ना जोड़ा की बैलेंस अछि गो नाइफ एज रे एट its center meter एज माने कोन अरे टोटल लेंथ होची 100 cm per 1 meter okay when two coins each of mass 5 gram are put on top of the other data coin at rakhala at the 12 centimeter mark माने लेफ्ट हैंड रो 12 cm दूर रे लेफ्ट हैंड रो 12 cm दूर रे एठी data coin rakhala तो ताबे क्वेश्चन वाला the stick is found to be balanced at 45 cm माने एडा माउथ ड्रॉप होचे तार पूरा लगता थिला 1 मीटर तो एटा बैलेंस अछि माने कोन 50 cm एबे जतरा हम दीटा कॉइन रखले कोडी 12 cm मार्क रे stick is found to be balanced at 45 cm इथु इतिर डिस्टेंस एबे 45 हे गेला तो इथु इतिर डिस्टेंस है कोन 55 cm ओके कि नै तो एबे हम कोन करियो कहै छै the stick is found to be balanced at 45 cm so what is the mass of the meter stick mass of the meter stick हमो काढियार अछि तो आर जत्ते भी मास से तळु गोटे फोर्स होछि तो द फोर्स तळु गोटे फोर्स होछि w इक्वल टू कोन आर मास इनटू g आ ए दिरा कॉइन रो मास केते 5 5 और डेले 5 ग्राम रो दिरा 5 ग्राम रो 5 5 5 plus 5 10 तो अंके तळु केते फोर्स होजंदी 10 into g g डाडी ग्राम नो g टा होछि कोन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एडा होछि सर टोटल
टोटल से तळु केते तार फोर्स पडुचे ओके तो ये भी बैलेंस अछि रो मीनिंग कोन आर इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम रे अछि तार अर्थ कोन नेट टॉर्क इज 0 नेट टॉर्क इज 0 रो मीनिंग कोन clockwise torque is equal to anti-clockwise torque ओके तो क्लॉकवाइज केते टॉर्क पड़छ हम काढिया और एंटी-क्लॉकवाइज केते काढदा ताले हमर आंसर रेडी बाहर पड़ियो तो एपे गोटे फोर्स पड़छ ये टॉर्क कपड़े दोची एंटी-क्लॉकवाइज आ आर जो स्टिक रो वेट जो गोटे टॉर्क पड़छ स्टार कपड़े एपड़े क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज टॉर्क रे केते तळु हमर तार वेट जान नांदी mg आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एठी रहउछ ना तो एपड़े से w फोर्स होची आ एठी थ्री डिस्टेंस केते 5 सेंटीमीटर तो टॉर्क केते w * 5 बुझि पड़छ ना नै आर जो ये क्लॉकवाइज टॉर्क जब पकोची क्लॉकवाइज टॉर्क जो आ जो वेट ता पड़ची तार वैल्यू मन करू mg w तार सबल जो टॉर्क रा पड़े सबल मन रखो टॉर्क ता सबल कोड पड़े तार सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पड़िबो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होची एडा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रो फोर्स ता पड़ची आ फोर्स ता जो एक्सिस रोटेट हो मन करले सेटु केते डिस्टेंस होची 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर रेडी पके देली तब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क केते आर फोर्स केते पड़ची 10g होची आर फोर्स 10g होची एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जहां रखी डिस्टेंस केते एठू एतिग्रे डिस्टेंस केते 45 - 12 हां कि नहीं अरे तो डिस्टेंस केडे पे एटी मनगर एटी एठू एती डिस्टेंस मनगर 45 थिला 45 - 12 कले एती डिस्टेंस बाहर पड़ियो तो एबे हम मास का वैल्यू पळा छिबे 5 mg is equal to 10g into 33 g cancel 5 10 to m equal to 66 gram okay तो mass पळसला mass of the meter stick काढिया कसला mass of the meter stick is 66 gram बुझा पड़ला ना कोन करली फर्स्ट गोटे स्टिक थिला जोडा कि ता बैलेंस थिला तार सेंटर माने 50 सेंटीमीटर जेतला हमें दीटा कॉइन को रखले 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे तार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने जोडी से बैलेंस आ पॉइंट मूव करी गला 45 सेंटीमीटर को 45 सेंटीमीटर से बैलेंस होतला तार मीनिंग कोन टॉर्क इक्वल टू 0 किछि भी रोटेशनल टॉर्क को पडु नथिला टॉर्क हमु 0 मिलला टॉर्क 0 रो अर्थ कोन क्लॉकवाइज टॉर्क जति पडछि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी सेति ही पडछि तो क्लॉकवाइज टॉर्क वैल्यू काढले क्लॉकवाइज टॉर्क टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिनर वैल्यू काढी इक्वल कले इक्वल कला पर हम टोटल मास मिल गला 66 ग्राम ओके तब रे हम नेक्स्ट एग्जांपल की मूव करिया एग्जांपल नंबर 6.17 जोडा अछि हमरो लास्ट क्वेश्चन ओके लास्ट क्वेश्चन सल्ला पर हमरो पूरा चैप्टर सरजियो चैप्टर सरी आगुरु मु तुमको चैप्टर सल्ला पर आ 10 मिनिट रे मु तुमको पूरा चैप्टर रो गोटे शॉर्ट रिवीजन कर देबे ओके चैप्टर में गोटे शॉर्ट रिवीजन करिया तापर आज रो लेक्चर को फिनिश करिया तो क्वेश्चन नंबर 6.17 कोन कहै छै a oxygen molecule has mass 5.3 10 to the -26 kg oxygen molecule ला सोले कोन O2 रोड मास तार मास केते गिवन अछि 5.30 into 10 to the power -26 kg and the moment of inertia about an axis to its perpendicular line to the line joining to the atoms एटा मन को लाइन जॉइन करछ एटा जोड़े perpendicular line आ थ्रू रे आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन अछि एटा जोड़े ऑप्शन आटा मास गिवन अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन अछि जार की वैल्यू होछि 1.94 into 10 to the power -46 kg meter square okay suppose the mean speed of such a molecule mean speed माने कोन केबेलेटर जो गैस रो particles are never at rest सबोले से माने मूव करता होते सराउंडिंग ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मूव करते ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो मूव जो करछनी बोथ डायरेक्शन में मूव करन x एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस सब जगह तक वेलोसिटी को ये मीन वेक्टर माने सब जगह वेलोसिटी को तर मीन वेलोसिटी मीन स्पीड का गाड़ी हम कह दीजिए
सब जाको प्लस माइनस कैंसिल आउट करके तार वेलोसिटी हम गिवन अछि 500 मीटर पर सेकंड। तापर क्वेश्चन गाना फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन सॉरी and the kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of translation. So it is a important part question from the rotational kinetic energy is 2/3 of kinetic energy translational. Find the average angular velocity of the molecule. हमें कौन जानी चाहिए फर्स्ट देखिए rotational kinetic energy का फॉर्मूला कौन जानी चाहिए हमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में कौन जानी चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में कौन दीजिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हम लिख करिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर is equal to 2/3 into kinetic energy translational जार की वैल्यू होचे 1/2 mv square। अब जहाँ जहाँ हमर गिवन अछि हमर आइडिया रे कोन अछि फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एवरेज हम एवरेज वेलोसिटी दे दिछि ताको हम आइडिया अछि एंगुलर वेलोसिटी। ओके तो अब फॉर्मूला रे हम क्वेश्चन पकिया क्वेश्चन जहाँ अछि हाफ इनटू आई रे वैल्यू कोन 1.94 into 1.94 into 10 to the power minus 46 into omega square is equal to 2/3 into 1/2 into mass value कितना है 5.3 into 10 to the power minus 26 into v square। ओके तो बे हाफ में पूरा कैंसिल कर ले ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है सॉरी v भी तो गिवन अछि मैं v स्क्वायर कहीं लिख ले v कितना है 500 into 500 तो सब जगह वेलोसिटी हम पके जिबी सब जगह वैल्यू पका 2/3 into 5.3 into 10 to the power minus 26 into 500 into 500 divided by एटा बड़ा मल्टीप्लाई इसलिए पड़ाले डिवाइड हिजबो 1.94 into 10 to the power minus 46 तो ओमेगा ର वैल्यू केता आसीबो root over of 2 into 5.3 into 10 to the power minus 26 into 500 into 500 divided by 1.94 into 10 to the power minus 46। तो जदि एडा हम सॉल्व करिया सॉल्व एडा निजे करियो सॉल्व कला परे जार की वैल्यू हमर आसीबो 6.675 into 10 to the power 14 रेडियन पर सेकंड। एडा हम कड़े को नहीं हां एंगुलर वेलोसिटी ठीक तो हम रोटेशनल मोशन आसे तो तुमको फिनिश करछे लेक्चर हमरो सल्ला रोटेशनल मोशन इज ए लिटिल टफ चैप्टर मु एग्री करछे किछि टिके टफ चैप्टर बट आर वेटेज बहुत अधिक तमे तारा बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करो या फिर नीट में प्रिपेयर करो या फिर जी में प्रिपेयर करो आर वेटेज बहुत अधिक नीट रे तो एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आसे प्रति जे रे भी गोटे दिरा क्वेश्चन आसे आ बोर्ड एग्जाम रे तार वेटेज सबुट अधिक सब चैप्टर सबुट अधिक वेटेज होची रोटेशनल मोशन तो तुम ए चैप्टर को केबे स्किप करि परियनी एटा को तुम इजीली ही पढ़ै छी तो एते भी टफ नहीं तो इस चैप्टर को तुम आराम से पढ़ी परियो। ओके आ एक्सरसाइज रे सब क्वेश्चन करे एक्सरसाइज एग्जांपल करि जे सेथि तो किछ ना किछ क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। ओके तो अब मु तुमको लास्ट 10 मिनिट रे मु चैप्टर को पूरा रिवीजन कर दोछ। ओके पूरा रिवीजन कोन एबे हमें पढ़ी चली ए चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ले what is rotational motion and what is translational motion रे कोन थिला सब ट्रांसलेशनल मोशन रे बट पार्टिकल सब जा पार्टिकल रो वेलोसिटी सेम रे बट रोटेशनल मोशन रे सब जा पार्टिकल रो v वेरिएबल और r भी वेरिएबल बट एडी v कांस्टेंट रोटेशनल मोशन। ओके तो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन रे डिफरेंस बुझला तापर हम कोन पढ़थिले बट pure translational motion in pure translational motion at any instant of time all the particles of the body have the same velocity। okay
ଆଉ rotational motion ରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ axis around rotate करे. Okay, then ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ what is a rigid body. Rigid body माने कौन जब rigid body माने होची ଗୋଟେ particle में जब force दोचंदी force even after giving the force देला ପରେ भी से particle ଭିତରେ जो दीटा particle जो जमे नोचंदी ଗୋଟେ body रे ताको भितरे जो intermolecular force थिला सेटा force ପରେ भी force देला ପରେ भी ताको भितरे distance सेम ही रहउचे. ओके फॉर एग्जांपल एटा होची body ताको भितरे दीटा particle थिला एटा force given होला ପରେ भी एठी जदी से मूव हिला दीटा particle भितरे distance सेम ही थिला एडी माने आटला एडिला एटा कहचे rigid body. ओके rigid body translation motion ऐसा introduction part थिला. Introduction part पर हम मूव कले center of mass. Center of mass माने कोन center of mass is a point. Center of mass is a point on a body where the mass of the whole body is concentrated. एटा center of mass होची गोटे body रे गोटे point जोडी की सब जगह mass तार concentrate ही थाउची. तो एटा काढिया पय हमें center of mass पे मैं तो formula कहली center of mass of किन काढिया गोटे given object रो center of mass पे formula है x COM equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. एटा होची दीटा ऑब्जेक्ट देथिबो. तो तीन चारटा ऑब्जेक्ट थिबो m3 plus x3 ऐड कर तो m3 भी ऐड कर दियो जितना ऑब्जेक्ट थे तो तो हमने से लगे थर्ड वेरी करेगा. ओके तो x सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला y सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला सब जगह हम इंटीग्रेशन सिग्मा माने होची सब जगह सम सेंटर ऑफ मास पर एडी हम क्वेश्चन करथिले 6.1 6.2 6.3 क्वेश्चन करथिले किमिदी हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लामिना काढी परिया किमिदी जदी दीटा प्लेन दिछि जार सेंटर ऑफ मास हम जाना नै सेतला हम किमिदी काढीबा. देन हम क्वेश्चन करथिले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किमिदी मोशन करे सेंटर ऑफ मास मोशन किमिदी करे ताबे मु त सेकेंड लेक्चर ए सब कहितली किमिदी हमें तार पोजीशन वेक्टर किमिदी काढिया वेलोसिटी किमिदी काढिया एक्सेलरेशन किमिदी काढिया फोर्स किमिदी काढिया एक्सटर्नल फोर्स रो एता कोन इंपोर्टेंस कोन तापर हमें मोडे एग्जांपल दी तो मोडे बुझेतिले तापर हमें मोमेंटम को शिफ्ट करथिले मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मीनिंग होचे मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास सेम जिंस. ओके तब रेडी को तो एग्जांपल दे करथिली जे किमिदी जदी गोटे मास ऊपर हम जदी किछि एक्सटर्नल फोर्स दो नांती तार सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी किमिदी केते समय जाय कांस्टेंट है. ओके तापर हमें वेक्टर प्रोडक्ट करथिले वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आ ऊपर गोटे लेक्चर मोड होचे पूरा पड़े कि वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट कोन जदी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रो फार्मूला होचे a b sin थीटा. ओके वेक्टर प्रोडक्ट माने सब बोले तार डायरेक्शन काढिया डायरेक्शन किन काढी पारे हमें दीटा रूल अछि कोन कोन फोटो होचे राइट हैंड थंब रूल आउट होचे स्क्रू रूल. ओके डायरेक्शन काढिया पे तापर तार सब जा प्रॉपर्टी हमें पढ़थिले कोन कोन प्रॉपर्टी तार जदी दीटा रे जदी हमें क्रॉस a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a कम है ना कम दिजन जकर डायरेक्शन ऑपोजिट रे. ओके सेटा करथिले तापर हमें वेक्टर प्रोडक्ट किमदी करचंदी तापर मु एता कहितली ट्रिक्स कहितली i j ओके क्लॉकवाइज गले पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज गले नेगेटिव i क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस i इक्वल टू j क्रॉस k इक्वल टू i बट j क्रॉस i इक्वल टू -k जदी हम एंटी क्लॉकवाइज बा नेगेटिव. ओके क्लॉकवाइज गले पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज गले नेगेटिव. ट्रिक कहितली आइडा किन सॉल्व करेरो सेरे भी ट्रिक कहितली. तापर हम पढ़ले एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लिनियर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी रो रिलेशन लिनियर वेलोसिटी कोन v इक्वल टू देन हमें मूव करले टॉर्क रो वैल्यू हम कोन जानचंदी सबल मन को f फर्स्ट के लिखनी सॉरी मिस्टेक लिखिबो टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f मोमेंटम फोर्स टॉर्क पे वर्क डन बाय टॉर्क पावर पे इंडिकेटर सिखले हमें तापर एंगुलर मोमेंटम r और क्रॉस रो r और f रो क्रॉस प्रोडक्ट सेम एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू r और p रो क्रॉस प्रोडक्ट. तापर हमें नेक्स्ट लेक्चर में मूव करथिले तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तार कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी किन प्रकार पार्शियल इक्विलिब्रियम माने कोन ऑब्जेक्ट ईदर of the equilibrium is not present. That's rotational equilibrium. सेटा कहै छै partial equilibrium मीनिंग ओ गोटे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नथिबो जदी से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अछि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नथिबो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नथिबो सेटा कहै छै partial equilibrium रो दीटा एग्जांपल बडे एग्जांपल बुक रे पढि परियो तार कपल माने कोन गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर ऑपोजिट एंड इक्वल टॉर्क पड़ुछ एटा कहै छै कपल. तब एग्जांपल्स हम करथिले तार प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढिथिले तापर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन हाउ center of mass is different from center of gravity में कहथिले important topic.
then our सबुठ important topic moment of inertia. Moment of inertia कौन जेमेती mass translational motion है, moment of inertia same with rotational motion है. It resists the rotational motion. It resists the rotational motion. आरो एते कौन mr square derivation में तमु आइडिया रे सिखैतिली फर्स्ट लेक्चर रे गोटे खाली रिंग रो derivation करी देखितिली आ बाकी डिस्क sphere hollow cylinder आउ solid sphere ए तीन चारटा जिंस रो तमे भी moment of inertia derivation काढी सीख important question आसी पारे सब जा रिजल्ट वैल्यू मन रखियो के तापर तीनटा इक्वेशन रोटेशनल मोशन रो जोड़ा को रिलेशन करी देखितली ट्रांसलेशनल मोशन सहित तापर वर्क मेथड और तापर कंपैरिजन एनालॉग्स के कार एनालॉग्स इरा भी मन रखियो तापर डायनामिक मोशन तापर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट तापर मैं एक्सरसाइज करथले तो मु तुम ओवरऑल पूरा चैप्टर कवर करेली आई होप चैप्टर टा तुम भल से बुझा पड़ला भल से पढ़ा पड़ी करो ये चैप्टर आ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम करिया प्रैक्टिस करो इजीली चैप्टर भी तुम टैकल कर पारियो so guys thank you next we will start the next topic from tomorrow okay I would नुआ लेक्चर से तो आज रोटेशनल मोशन चलला